हेलो स्टूडेंट आज ए वीडियो रे आमे पढ़िबा डिफरेंशिएबिलिटी उपरे क्वेश्चन करबा एलिमेंट्स बुक रो एक्सरसाइज 7 जे रो क्वेश्चन करबा पर ता पूर्वरु किछिटा स्पेशल फंक्शन रो डिफरेंशिएबिलिटी विषय रे डिस्कस करबा गोटे हैला सपोज गोटे फंक्शन अछि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस ब्रैकेट x आमे जानिचु greatest integer function is not continuous at any integers. A function कौन सी integer पाखरे continuous नुए. Bracket x is not continuous at any integer m belongs to z. कहीं ना प्रत्येक इंटीजर पाखरे ये ब्रैकेट एक्स जंप करे आम यार ग्राफ रु जानिचु तथा मुझे यार ग्राफ डिस्कस करी जेहेतु यहाँ कौन सी इंटीजर पाखरे कंटिन्यूअस नुए दिस इम्प्लाइज दिस ब्रैकेट एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल at any integer m belongs to z. कहीं आम जानिचु डिफरेंशिएबिलिटी पाई नेसेसरी कंडीशंस होची कंटिन्यूटी जेहेतु ए फंक्शन कौन सी इंटीजर पाखरे कंटिन्यूअस नुए ता माने दिस फंक्शन कौन सी इंटीजर पाखरे डिफरेंशिएबल भी नुए तेणु आम ये मन रखा ब्रैकेट एक्स बा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन is not differentiable at any integer. Okay, कहीं ना आम जानिचु एटा हला ब्रैकेट एक्स रो ग्राफ x axis this is the y axis origin 0 रु 1 भितरे सपोज ये पॉइंट हला 1 0 रु 1 भितरे ब्रैकेट एक्स रो वैल्यू रहबो केते 0 तो 1 रु 2 भितरे ब्रैकेट एक्स रो वैल्यू रहबो 1 2 रु 3 भितरे ब्रैकेट एक्स रो वैल्यू रहबो 2 0 रु 1 भितरे रहला वैल्यू हैला 0 त माने 1 पाखरे वैल्यू एटा एठी नाही 8 कंसीडर कराइछि 2 पाखरे एटा ओपन अछि एठी नाही ऊपर कंसीडर होइछि तो प्रत्येक इंटीजर पाखरे फंक्शन टा जंप करूछि बाइडी ब्रेक क्रिएट होची जंप क्रिएट होची तेणु ये फंक्शन प्रत्येक इंटीजर पाखरे कंटिन्यूअस नुए जेतु एटा इंटीजर पाखरे कंटिन्यूअस नुए ताले ये कौनसी इंटीजर पाखरे डिफरेंशिएबल भी हेबो नाही. ओके नेक्स्ट आमे गोटे फंक्शन नबा मॉडुलस फंक्शंस नेक्स्ट गोटे फंक्शन नबा मॉड ओके सो आमे mod x फंक्शन नबा जे कि mod x फंक्शन मॉडुलस फंक्शन बा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन ए फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल at x equal to 0 कहीं ना mod फंक्शन आमे ग्राफ जानिचु दिस इज v शेप x इक्वल टू 0 पॉइंट रे फंक्शन डिफरेंशिएबल हबो नाही कहीं ना 0 पॉइंट रे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बाहरिबो -1 राइट हैंड डेरिवेटिव बाहरिबो +1 तो डिफरेंशिएबल हबोनी तो mod x इज नॉट डिफरेंशिएबल at x इक्वल टू 0 बट mod x इज कंटिन्यूअस at x इक्वल टू 0 mod x टा कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करिबो 0 रे whereas डिफरेंशिएबल 0 रे नुहे सिमिलरली से एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन रो आगोटे नबा सपोज x - 2 रो mod ए फंक्शन टा इज नॉट डिफरेंशिएबल x - 2 रो mod इज नॉट डिफरेंशिएबल at x इक्वल टू 2 तो मॉडुलस फंक्शन रो जो भीतर जो फंक्शन टा थिबो जो वैल्यू थिबो ताको इक्वलिंग टू 0 कले जो नंबर आसीबो से नंबर रे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन डिफरेंशिएबल हबो नाही
whereas से पॉइंट रे absolute value function continuous हबो कहीं ना continuity हम differentiability पाई continuity टा होची must differentiable होउनी तार माने नुए जे continuity हबोनी किंतु continuity न होतिले differentiable हबो नै ए कथा हमें कंसीडर करबा ई थिला जस्ट केतेटा स्पेशल फंक्शंस इको पॉइंट रे डिफरेंशिएबल होनी हम माने जानले एबे हमें एक्सरसाइज 7J रो किछि क्वेश्चन करबा एक्सरसाइज 7J रे अछि क्वेश्चंस टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फर्स्ट हमें से फंक्शन मानकर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करबा एंड आल्सो कंटिन्यूटी चेक करबा डिफरेंशिएबिलिटी चेक करिया पय हमें जानिचु जो पॉइंट रे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करा जाए तार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करा जाए और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होबा दरकार तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फर्स्ट क्वेश्चन अछि डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी टेस्ट करिया पय 1 माइनस 1 बाय mod x sorry 1 by x रो mod at x equal to 1 पॉइंट रे आमे ई फंक्शन रो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करिबा एंड इट्स कंटिन्यूटी चेक करिबा ओके देखिबार कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी सैटिस्फाई होची ना नाही तो फर्स्ट हमें डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करछे डिफरेंशिएबिलिटी तो जो फंक्शन दिया जाइछि लेट दैट फंक्शन इज fx let fx equal to 1 minus 1 by x रो mod तो डिफरेंशिएबिलिटी में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव टेस्ट करा जाए तो LSD को हम लिख परिबा f dash 1 minus that is equal to limit h tends to 0 f1 minus h minus f1 divided by minus h and this is equal to limit h tends to 0 denominator तो सही minus h रहिबो f1 minus h रो वैल्यू रहिबो केते 1 minus 1 by 1 minus h रो mod minus f1 रो वैल्यू होची 0 f1 पुट कले x प्लेस रे आंसर आसीबो 0 सो आको हम सिंपलीफाई करबा ऊपर लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h सो एलसीएम गला 1 माइनस h थरला 1 माइनस h माइनस 1 रो mod तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसल आउट दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 यसला h divided by 1 minus h रो mod by minus h that is equal to limit h tends to 0 h divided by minus h whole into 1 minus h रो mod okay एबे h cancel out एबे हमें 0 पुट कर दबा 1 by minus 1 minus 0 रो mod so 1 by minus 1 तो आंसर इज minus 1 सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एक्जिस्ट कला जार वैल्यू आसिला -1 सेमती आमे RSD चेक करबा RSD दैट इज f dash 1 plus which is equal to limit h tends to 0 f1 plus h minus f1 divided by h okay so this value becomes limit h tends to 0 h तो 1 minus 1 divided by 1 plus h रो mod minus f1 is 0 okay आको हम सिंपलीफाई कले रिजल्ट आसीबो दैट इज इक्वल टू लिमिट h tends to 0 एलसीएम गला 1 plus h तो 1 plus h minus 1 divided by 1 plus h रो mod divided by h so this value equal to limit h tends to 0 h divided by h 1 plus h रो mod so एबे वैल्यू पुट कले आसला 1 by 1 plus 0 रो mod
तो 1 by 1 आंसर इज 1 एटी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एक्जिस्ट कला दैट इज -1 राइट हैंड डेरिवेटिव एक्जिस्ट कला दैट इज +1 बट LSD is not equal to RSD hence LSD is not equal to RSD so fx is not differentiable at x equal to 1 तो आम क्वेश्चन रो डिफरेंशिएबिलिटी चेक कले देखिले जे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव सेम होनी सो ए फंक्शन डिफरेंशिएबल नुहे तो कंटिन्यूटी चेक करवा कहीं डिफरेंशिएबिलिटी किसी कन्फर्म करी हबनी एटा कंटिन्यूटी हेतिबो कि नाही तेणु आम कंटिन्यूटी चेक करवा तो कंटिन्यूटी चेक करिया बेले आमे देखुजे तार सेई पॉइंट रे लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू सेम अच्छे कि नाही जदि लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शनल वैल्यू सेम थिबो देन वी से दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट कंटिन्यूटी तो कंटिन्यूटी आमे चेक करछे सेई एट x इक्वल टू 1 रे तो फर्स्ट कथा फंक्शनल वैल्यू f1 इज 0 बिकॉज 1 माइनस 1 by x प्लस 1 रखिले दैट इज 1 minus 1 रो mod 0 रो mod 0 तो फंक्शनल वैल्यू 0 हैला लिमिटिंग वैल्यू बाहर करबा लिमिट x टेंड्स टू 1 fx कहले अछि 1 minus x रो mod सो एठी हमकु LHL RHL नै लिमिट बाहर करिया को पड़िबो लिमिट x टेंड्स टू 1 एटी अछि mod x एलसीएम नै गले mod x तो एटा असला x minus 1 रो mod सेम चीज आको हमें चेक करबा LHL एंड RHL नै फर्स्ट हमें LHL करूचे लिमिट x टेंड्स टू 1 minus x minus 1 रो mod डिवाइडेड बाय mod x याकू ए फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करछीटा सो को h फॉर्म रे ट्रांसफॉर्म करले हबो लिमिट h टेंड्स टू 0 x जगह रे रखिबा हमें 1 minus h minus 1 डिवाइडेड बाय 1 minus h रो mod बेटा कैंसिल गला प्लस माइनस देन दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 तो h डिवाइडेड बाय 1 minus h रो mod that is 0 by 1 answer is 0 here LHL is 0 so RHL हमें चेक करिवा RHL होची लिमिट x टेंड्स टू 1 plus fx कहले एटी अछि हमरो mod x by x minus 1 रो mod ताको हमें सिंप्लीफाई करतले से फंक्शन को हां सॉरी उल्टा लिखितली दैट इज एटा हमर हबो x minus 1 रो mod divided by x रो mod function अछि that is x minus 1 रो mod divided by x रो mod आको हमें h फॉर्म रे ट्रांसफर करले that is limit h tends to 0 x प्लस रिप्लेस करबा 1 plus h पर mod तले भी mod so that is limit h tends to 0 h रो mod h by 1 plus h रो mod h प्लस 0 पुट करली तो 0 by 1 plus 0 रो mod 0 by 1 आंसर इज 0 so it LHL RHL functional value सब सेम अछि so this function continuous LHL equal to RHL equal to functional value is 0 hence fx is continuous at x equal to 1 so हमें जानिलु ए फंक्शन टा 0 पॉइंट रे सॉरी 1 रे कंटिन्यूअस हला किंतु 1 रे टा डिफरेंशिएबल हेलानी ओके एबे हमें सेकंड क्वेश्चन टेस्ट करिवा डिफरेंशिएबिलिटी भी एंड कंटिन्यूटी भी सेकंड क्वेश्चन अछि x square mod x
चेक करिया दिखाई at x equal to 0 रे ए फंक्शन टार 0 रे डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी चेक करबा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आमे तार डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करबा differentiability let fx equal to x square mod x fx is x square mod x आकु चाहिए आमे आउ टिके सिंप्लीफाई कर परिबा x cube when x is greater than equal to 0 and minus x cube when x is less than 0 kana mod x रो दुटा वैल्यू जे plus x and minus x when x is greater than equal to 0 mod x value is x when x is less than 0 mod x is x so this value is x cube and minus x cube just simplifications so आमे यार फर्स्ट डिफरेंशिएबिलिटी चेक करबा ना डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करचे तो फर्स्ट f dash 0 minus f dash 0 minus रे लिमिट h tends to 0 f 0 minus h minus f0 divided by minus h so limit h tends to 0 f of minus h minus f0 f0 is 0 minus h since h is a positive and minus h is a negative number so this value becomes minus h is a positive number minus h is a negative number if minus h is a negative number I mean negative number hela pare ame ithre put kariya minus x cube so this is minus of minus h ra cube by minus h that is limit h tends to 0 yasila plus h cube candidate minus h cube e minus minus plus h cube divided by minus h एबे 0 by 0 हो जाउची लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट सॉरी दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 एटा होची माइनस h स्क्वायर सो वैल्यू इज 0 lsd एग्जिस्ट कला जार वैल्यू 0 हला सेमती एबे rsd हमें देखिबा f dash 0 minus सॉरी 0 plus limit h tends to 0 f0 plus h minus f0 divided by h limit h tends to 0 fh e positive number so it h cube minus 0 by h limit h tends to 0 h square so this value 0 तो माने lsd exist कला जार वैल्यू 0 हैला rsd भी exist कला जार वैल्यू 0 हैला सो आमे कहि परिबा इथे आमे देखुचे lsd equal to RHD so fx जोटा कि थिला हमर x square mod x is differentiable at x equal to 0 एबे आमे आरो कंटिन्यूटी चेक करबा जानिले जे एटा डिफरेंशिएबल होची डिफरेंशिएबल हेले माने नु जे कंटीन्यूअस हबो कि हे जिवो सेति कंटिन्यूटी भी चेक करिया पड़िबो सो आमे कंटिन्यूटी एबे चेक करबा तारो कंटिन्यूटी रे देखुचे जे से फंक्शन रो फंक्शनल वैल्यू f0 इज 0 बे lhl देखिबा lhl लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस fx so it हमें कंसीडर करूचे लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस fx रो वैल्यू जेतु हमें फंक्शन टा डिफाइन करथिले x जेते लेस देन 0 माइनस x क्यूब so here we put minus x cube since h tends to 0 minus something less than 0 so this value is 0 put kali directly so this value is 0 so एटी x tends to 0 minus हबो एटी भी x tends to 0 minus हबो एबे x प्लेस रे 0 पुट कले डायरेक्टली 0 आसी गला सेमति हमें RHL बाहर करिबा RHL रे लिमिट x tends to 0 plus fx
since x is more than 0, so we take the value of fx is xq, तो put करली 0. Functional value भी 0, limiting value भी 0, continuity value भी RHL भी 0. So we say LHL equal to RHL equal to functional value. The value is 0. So the function x square mod x is continuous at x equal to 0. Okay, so आउ जो नेक्स्ट क्वेश्चंस गुड़ा अच्छे आम नेक्स्ट भिडियो पढ़ा ना भिडियोटी बहुत लंबा हो. तो आज ये जो दुईटा क्वेश्चन आम कले एथुरु जानिले जे दुईटा क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी चेक कले एंड कंटिन्यूटी चेक कले. डिफरेंशिएबिलिटी जदि भी होथबो कंटिन्यूटी न ही भी पारे से कंटिन्यूटी भी हमको चेक करिया पड़ला. किंतु जदि कंटिन्यूअस होथबो गोटे फंक्शन गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रे कंटिन्यूअस हो नथिबो गोटे पॉइंट रे ताले डिफरेंशिएबल हबनी एट दैट पॉइंट. आज पई एतिकी वीडियो रे पढ़िबा. नेक्स्ट वीडियो रे आमे आरो नेक्स्ट क्वेश्चंस गुडा करिबा. थैंक यू.